I am starting with the motor system examination, and this is very important for the first year and final year students for the medicine and pediatrics exam. Now we'll see how to do the motor system examinations. So what are the headings in which we'll do the motor system examination? So first we'll check the nutrition, then tone, then power or strength of the muscle, and then coordination, reflexes, abnormal movements if they are present. And besides that, we also check for the gait of the patient. So we are starting with the nutrition of the muscle, nutrition or bulk of the muscle. Let us see how to do examination for the nutrition of the muscle. So let us see in our subject. Here our subject is Mr. Santoshji, and here I am going to do the examination for the nutrition. So first you have to do inspection. So I can see in inspection there is no gross difference in the bulk of the muscle bilaterally. In case if I am doing examination of the upper limbs, so there is no gross difference in the muscle mass in the upper limb. So on inspection there is no gross atrophy or hypertrophy of the muscle. Now I will do the palpation. So on palpation, muscles of both the sides seems to be soft. Okay, there is no firmness or no flabbiness in the muscles. You have to compare bilaterally. So in case if there is flabbiness, it means there may be atrophy of the muscles. In case if it feels to be firm, it means there may be hypertrophy of the muscles. So here muscles bilaterally are soft, neither flabby nor firm. Now I will do the measurement of the muscle. So measurement has to be done from a fixed bony point. Suppose I am doing measurement of the muscle girth of the arm, then I can take either olecranon process or acromion process. I can use either acromion process or olecranon process. So any of the fixed bony point you can use, and you can measure the circumference of the muscle. So bilaterally circumference of the muscles of the arm are normal. Same thing you can do in the forearm like this. So here you can use the bony point olecranon process. So from there at a fixed distance you can measure the circumference, and same thing you have to do opposite side. Okay. So here also circumference is equal bilaterally. So nutrition of the muscle is normal and equal bilaterally. Now you must know the causes of atrophy and hypertrophy of the muscle. So what are the causes of atrophy of muscle? So what is atrophy? Atrophy is decreased muscle mass along with the decreased strength of the muscle. So what are the causes of atrophy? Atrophy can occur because of prolonged disuse of any muscle. That may be because of if somebody is lying on bed for a long time maybe due to fracture or maybe due to any other injury. Somebody is restricted to the bed may lead to the atrophy of the muscles which he is not using. Atrophy may also be due to malnutrition, cachexia, any rotator cuff injury, or any other cause which can lead to the disuse of the muscle may lead to the atrophy of the muscle. Now what is hypertrophy? Hypertrophy is the increased muscle mass. In hypertrophy there is increased muscle mass, along with there is proportionate increase in the strength of the muscle. Okay, so along with the increased nutrition or muscle mass, there is increased strength of the muscle in hypertrophy. Along with that, the muscle will become little more firm. Okay, so what are the causes of hypertrophy? Hypertrophy is because of increased use of that particular group of muscles.
Okay, if there is excessive use of muscles, like if somebody is doing exercise for prolonged time, so there will be hypertrophy of that particular group of muscles. What is pseudo hypertrophy? In pseudo hypertrophy, there is increased muscle mass, but there is no increase in the strength of the muscle, or even the strength of the muscle may decrease in that case. So that is pseudo hypertrophy. Okay, what are the causes of pseudo hypertrophy? Duchenne's dystrophy. Duchenne's dystrophy is one of the example of the pseudo hypertrophy of the muscle. So this is about the nutrition of the muscle. See how to examine for the tone of the muscles. So first of all, we must know what is tone of the muscles. So tone of the muscle is actually some amount of the resistance is present in the resting muscle due to the discharge of the asynchronous and frequent discharge of the gamma motor neuron. And this is the resistance to the passive stretch of the muscle. If we will do the passive stretch of the muscle, some amount of the resistance we are going to feel. So let us see how we check for the tone of the muscle. So for that, for example, I am examining the tone of the muscles of the upper limb. So here I will do the passive movement. ठीक है, आपको हाथ बिल्कुल ढीला छोड़ना है, मैं ही पूरा मूवमेंट करूंगी, आपको खुद कोई मूवमेंट नहीं करना है. ठीक है. So here how you check for the tone of the muscle. So tone of the muscle depends upon the integrity of the reflex arc. Okay. Now when there will be decreased tone of the muscle, the condition is called as the hypotonia. Now what are the causes of the hypotonia? Whenever there will be any lower motor neuron lesion, that will lead to the hypotonia of the muscles. Like if there is any neuropathy, either toxic or metabolic neuropathy leads to the hypotonia. If there is any peripheral nerve injury, that will lead to the hypotonia. If there is any lesion in the anterior horn cell like poliomyelitis, that will lead to hypotonia of the muscle. In case if there is any lesion in the afferent nerves like in syphilis, that also leads to hypotonia. In case of deep sleep, there is hypotonia. Now what is hypertonia? Hypertonia is increased tone of the muscle. Okay, so whenever we are doing the passive movement, we will feel more resistance to the passive stretch of the muscle. So what are the normal types of the hypertonia? One is spasticity, second is rigidity. In spasticity, there is hypertonia only in the anti-gravity group of muscles. Okay, only in the anti-gravity, like in upper limbs, flexor muscles are the anti-gravity muscle. In case of lower limb, extensor muscles are extensor and adductor muscles are the anti-gravity muscles. So in spasticity, especially clasp knife spasticity, that occurs in the pyramidal tract lesion. So in upper motor neuron lesion, so that leads to the clasp knife spasticity. So in case of clasp knife spasticity, there is resistance in the initial movement. In the initial range of the motion, there is increased resistance, but then there is a release, means there is decreased resistance after that. Okay, I will show you how we are going to feel in that. So cause for the spasticity, cause for the clasp knife spasticity is upper motor neuron lesion or pyramidal tract lesion. So in that single group of muscle, especially the anti-gravity muscles, flexors of the upper limb and extensors of the lower limb are involved. So that is spasticity. Now there is rigidity. Another type of hypertonia is rigidity. In rigidity, both the group of muscles, gravity and anti-gravity muscles are involved, and this is again of two types. Okay, one is cogwheel rigidity, second is lead pipe rigidity. So cogwheel rigidity occurs in regions of the basal ganglia, especially involving the substantia nigra. Like in Parkinson's disease, we will find the cogwheel rigidity. So what occurs in cogwheel rigidity? In cogwheel rigidity, there is a resistance and there is a gives way, resistance, loss of resistance and gives way. I will show you how it going to feel. And then there is lead pipe rigidity, in which there is increased resistance in whole range of motion.
Okay, so you'll feel more resistance, increased resistance in whole range of motion, okay, while doing the passive movement in the subject. Okay, so that is lead pipe rigidity that occurs in again Parkinsonism and catatonic states, dementia. Now we'll see how we are going to feel in these three types of the hypertonias. तो अभी आपको क्या करना है संतोष जी, जैसे मैं ये आपका पैसिव मूवमेंट ऐसे कर रही थी ना, आपको मेरे हाथ में करना है, ठीक है? अभी मैं यहाँ आ जाती हूँ, आप कीजिए. So first of all, I'll show you how you feel in the clasp knife spasticity. कीजिए, हाँ, एक हाथ यहाँ पर, एक हाथ यहाँ पर, हाँ. So this is normal tone. What occurs in clasp knife spasticity? So initially there is resistance, then gives way. Initially there is resistance, then relaxation. In the initial range of motion there is resistance, then gives way. Resistance and then relaxation. So this is clasp knife spasticity, in which there is, in the initial portion of the movement, there is increased resistance, but then there is relaxation, means loss of resistance. फिर से कीजिए. Let us see what we find in the cogwheel rigidity. Resistance, then relaxation. Resistance, then relaxation. So this is cogwheel rigidity, occurs in the Parkinson's disease. ठीक है. Third type of the, फिर से कीजिए. Third type of the hypertonia is lead pipe rigidity, in which there is increased resistance in whole range of motion. कीजिए. Increased resistance in whole range of motion like this. Okay, so that occurs in catatonic states, Parkinsonism and dementia. So this is lead pipe rigidity. ठीक है. So this is all about the hypertonia and tone of the muscle. So this is about the tone of the muscle and different modes of the increase or decrease tone of the muscles. Now I will start the examination of strength or power of muscles. So before knowing how to examine the power of different muscles, we should see what is different grading of strength or power. So first grade is grade 0, that is complete paralysis, in which the patient is not able to do any kind of movement. Grade 1 is flicker of contraction, means you can see the contraction of the muscle, but movement will not be possible because of contraction of that muscle. No movement will be possible. Grade 2 is movement possible, but in absence of gravity. When effect of the gravity is eliminated by appropriate positioning of the limb, in that case only movement will be possible. Okay, grade 3 is movement possible against gravity but not against resistance. If we are applying some resistance against the movement, in that case movement will not be possible, but movement is possible against gravity. Then there is grade 4, in which the movement is possible against some degree of or varying degree of resistance, but not against full resistance. Okay. Then grade 5 is normal power or normal strength, in which the movement is possible against full resistance. So these are all grades of strength which are asked very commonly in the viva. Let us see how to examine for the power of the muscles in the upper limb. So we will start from the shoulder joint. So let us see how to do different kind of movement. So first of all, he is my subject today, Mr. Santosh ji. I will do the testing for the power of muscles first at the shoulder joints. So first of all, I will check for the abductors. So for that, I'll ask him to abduct his arm, okay, and I will put resistance against it. तो संतोष जी आपको क्या करना है, जैसे मैं ऐसे हाथ रखा है, इस तरह से हाथ उठाना है,
ठीक है, मैं धक्का दूंगी उल्टी डायरेक्शन में, लेकिन आप अपनी पूरी पावर से हाथ उठाना। ठीक है, उठाइए। ठीक है, so initial 30 degree of the abduction is produced by is caused by the supraspinatus muscle, and next 60 degree of the movement is caused by the deltoid muscle. So his power is 5/5 for the abductors muscles. अब क्या करना है, ऐसे हाथ ला के आपको अंदर की तरफ हाथ ले जाना है। मैं उल्टी डायरेक्शन में धक्का मारूंगी, लेकिन आपको पूरी पावर से अंदर लाना है। ठीक है, करिए। So this I tested for the adductors of the shoulder, okay, or adductors of the arm. Now I will check for the internal rotators and external rotators of the shoulder joint. So let us see how to do it. अभी आपको क्या करना है संतोष जी, ऐसे हाथ रखना है। ठीक है, मुट्ठी आराम, ऐसे हाथ रखना है, इसको अंदर की तरफ ले जाना है। तो मैं धक्का मारूंगी उल्टी डायरेक्शन में, ओके, तो आप लेकिन अपनी पूरी पावर से करना। फिर क्या करना है, आपको बाहर ले जाना है। फिर से मैं धक्का मारूंगी उल्टी डायरेक्शन में, लेकिन आप अपने पूरे पावर से करना। ठीक है, अंदर ले जाइए। सो दिस आई एम टेस्टिंग फॉर द इंटरनल रोटेटर्स ऑफ द शोल्डर। कोहनी यहीं रखनी है। अब बाहर की तरफ ले जाइए। सो दिस इज फॉर द external rotators. This is for internal rotators and this is for external rotators. Same thing you have to repeat on the opposite side, and you have to compare the power. Okay, so this was about the shoulder joint. Now you test the power of flexors of the elbow joint. So for that he has to do flexion at the elbow joint. अभी क्या करना है, आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो मैं धक्का मारूंगी, लेकिन आप अपने पूरे पावर से करना जी। तो now I am checking the power of the flexors of the elbow or biceps muscle. So power is 5/5. Okay, examiner may ask you to check to test strength of the brachioradialis muscle. So what you have to do, you ask your patient to put his arm in mid prone position and to flex. Okay, अभी आपको क्या करना है, ऐसे हाथ रखना है। ठीक है, और ऐसे करना है। मैं धक्का मारूंगी, पर फिर भी आपको पूरा करना है। ऐसे करना है। ठीक है, करिए। सो दिस इज आई एम टेस्टिंग द पावर ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस मसल, विच इज अगेन 5/5। अब आपको क्या करना है, ऐसे हाथ रखना है और ऐसे खोलना है। ठीक है, मैं अपोज करूंगी। सो दिस इज पावर टेस्टिंग फॉर द एक्सटेंसर्स ऑफ द एल्बो और ट्राइसेप्स मसल। ओके, मूवमेंट यहाँ पे नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे करना है। ठीक है, फिर से करिए। सो दिस इज हाउ यू टेस्ट पावर ऑफ द ट्राइसेप्स मसल। Different kind of movements at the wrist joint. So now we'll see how to test power of the extensors of the wrist. तो अभी संतोष जी आपको क्या करना है, ऐसे हाथ रखना है, इस मुट्ठी बांधिए, इसको ऊपर की तरफ जैसे मैं ले जा रही हूँ आपको ले जाना है। मैं दबाव डालूंगी ऊपर से, लेकिन फिर भी आप पूरे प्रेशर से ले जाना। सो पर्सन यू आस्क योर सब्जेक्ट टू एक्सटेंड हिज रिस्ट, okay, making a fist, and then you will put the resistance against it. तो करिए संतोष जी। So this is extension of the wrist. So again, power of the muscles of the extensors of the wrist is 5/5. So muscles responsible for the extension of the wrist are extensor carpi radialis and extensor carpi ulnaris. Now let us see how to check power for the flexors of the wrist. ऐसे करिए। Now you ask your subject to try to touch his forearm with the help of fingers. Okay? आपको क्या करना है संतोष जी, उंगलियों से ऐसे मोड़ना है ना, कोशिश करनी है इसको टच करने की। टच नहीं हो पाएगा पर ऐसे कोशिश करनी है। ठीक है, मैं प्रेशर डालूंगी पर आपको पूरा करना है। करिए। So this is how you check power of the flexors of the wrist. So flexors of the wrist, muscles responsible for the flexors of the wrist are flexor pollicis brevis, flexor carpi radialis and palmaris longus. So power of these muscles are 5/5. Now we will test power of the flexors of the fingers. अभी आपको क्या करना है संतोष जी,
इस उंगली को टाइटली पकड़ने की कोशिश करनी है, मैं बाहर निकालने की कोशिश करूंगी पर आपको टाइटली पकड़नी है. यू आस्क योर सब्जेक्ट टू होल्ड योर फिंगर टाइटली, ओके, एंड देन यू ट्राई टू, हाँ पकड़ लीजिए, try to take out your fingers. So power of the flexors of the fingers is 5/5. So what are the muscles responsible for the flexion of the fingers? They are flexor pollicis brevis, flexor pollicis longus, flexor digitorum superficialis and flexor digitorum profundus. So these are the chief flexors of the fingers. So power of the flexors of the fingers are 5/5. Now let us see how to test power of the extensors of the fingers. तो अभी आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे मुट्ठी बांध के खोलने की कोशिश करनी है. मैं प्रेशर डालूंगी पर आपको पूरी ताकत से खोलना है ना. ये उंगलियां ऐसे बंद है, ऐसे खोलना है. सो लेट अस सी पावर ऑफ द extensors of the fingers. So again the power is 5/5. So what are the muscles responsible for the extension of the fingers? Are lumbricals. Okay, lumbricals do extension of the fingers as well as they are responsible for the flexion of the metacarpophalangeal joint. So this kind of movement is done. Now I'll test power of the interossei muscle. Okay, so for that I'll ask my subject to hold this paper between the fingers. अभी आपको क्या करना है, इस पेपर को अच्छे से होल्ड करना है, पकड़ना है. मैं निकालूंगी पर आपको अच्छे से पकड़ना है. So this is, I am testing power of the adductors of the fingers. What are the muscles responsible for the adduction of the fingers? Are palmar interossei. Okay, so power is again 5/5. अब आपको क्या करना है, उंगलियों को ऐसे फैलाना है ना. मैं प्रेशर डालूंगी लेकिन आपको पूरी ताकत से फैलाना है. You ask your subject to spread his fingers. You put power against it. Okay, you press against it, but he will try to spread his fingers. So again, power of the abductor muscles are 5/5 and that are dorsal interossei muscles. So that is how you have tested power of the muscles responsible for the different kind of movements of the fingers. Now we'll see power of the thumb. Power of the muscle responsible for the different kind of movements at the thumb. So let us see what is extension of the thumb. So when movement of the thumb is done in the plane of palm, away from the palm is extension, and when it is towards the palm it is flexion. Okay, so I'll ask my subject to do extension. अभी क्या करना है संतोष जी, आपको अंगूठा बाहर की तरफ ऐसे ले जाना है ना. मैं प्रेशर डालूंगी. So this is, I have tested power of the extensor of the thumb. अभी इसको अंदर यहाँ की तरफ लाना है. ठीक है, this is what I am testing the power of the flexors of the thumb. Now how to test power of the abductors of the thumb. Now what is abduction of the thumb? When movement of the thumb is done at right angles of the plane of palm. Okay, so this is the abduction of the thumb and this is adduction of the thumb. अभी क्या करना है संतोष जी, आपको अपना हाथ ले जाना है, इस पेपर के अलोंग यहाँ तक लाना है. ठीक है, आपका अंगूठा. ओके, इस पेपर को छूते हुए यहाँ तक लाना है. मैं रोकने की कोशिश करूंगी पर आपको पूरी ताकत से लाना है. ठीक है, सो यू आस्क योर सब्जेक्ट टू मूव हिज थंब अलोंग द पेपर विच इज केप्ट एट द राइट एंगल्स ऑफ द प्लेन ऑफ द पाम. ओके, एंड यू विल अपोज द मूवमेंट. करिए. ओके, ठीक है. सो पावर ऑफ द एबडक्टर्स ऑफ द थंब इज 5/5. ओके, अभी आपको क्या लाना है, यहाँ से आपको वहाँ ले जाना है फिंगर्स तक. ठीक है, और पेपर के अलोंग ही लाना है ना, पेपर को टच करते हुए. ओके, सो दिस इज हाउ यू टेस्ट फॉर द एडक्टर्स ऑफ द थंब. ओके, अगेन द पावर इज 5/5. अभी आपको अंगूठे से इस उंगली को छूना है टिप पर, है ना. सो दैट इज अपोजिशन, मूवमेंट ऑफ द अपोजिशन. टच करिए. ठीक है, फिर से टच करिए. Okay, you ask your subject to touch the tip of the little finger with the help of the tip of the thumb, and this is apposition movement, and you will oppose that movement. Okay, so again the power of the muscles which are responsible for the movement at the wrist, at the fingers and at the thumb are 5/5. You have to compare these movements on the opposite side. Now we will check power of the pectoral muscles.
So for that you ask your subject to stretch out his arms in front of him, and then he will try to clap, okay, or clasp, and then you oppose the movement. So संतोष जी कैसे करना है, आपको ऐसे हाथ करने हैं और पास में लाने हैं. मैं प्रेशर लगाऊंगी उल्टी डायरेक्शन में, लेकिन आपको ऐसे ही करना है. करिए, हाथ ऐसे सामने लाइए. इसको हाथ को जैसे ताली बजाने की कोशिश करनी है ना, करिए. So that is how you can see the prominence of the pectoral muscles. By doing so you can see the prominence of the pectoral muscles. So again the power of the pectoral muscles is 5/5. अब घूम जाइए. Let us see how to test power of the serratus anterior muscle. So for that you ask your subject to put his hand on a plane surface and try to press it. Okay, on doing it, scapula will become prominent, and in case if there is winging of scapula, it will become more prominent on doing such kind of movements. अभी क्या करना है संतोष जी, आपको बोर्ड पर ऐसे हाथ रखना है और प्रेशर डालना है. ठीक है, हाँ करिए. नहीं, अपने प्लेन पर ही लाइए. इधर इधर, थोड़ा और पीछे हो जाइए. हाथ पूरे स्ट्रेच होने चाहिए. ओके, सो ही विल ट्राई टू put pressure on the plane surface. Okay, डालिए, प्रेशर डालिए. On doing this you can see the scapula has become prominent and there is no winging of scapula. Okay, suppose if winging is not visible normally, it will be definitely visible on doing so in case if it is present. ठीक है, अब रहने दीजिए. अब क्या करना है संतोष जी, now we are going to test power of the latissimus dorsi. Okay, so अभी संतोष जी क्या करना है, आपको ऐसे हाथ करना है. ठीक है, पीछे की तरफ इसको मिलाने की कोशिश करनी है. ठीक है, मैं प्रेशर डाल के दूर करूंगी पर आपको मिलाने की कोशिश करनी है. सो यू आस्क योर सब्जेक्ट टू क्लैप बिहाइंड हिज बैक, ओके, विद बोथ द हैंड्स, एंड यू ट्राई टू, ओके, पुट प्रेशर अगेंस्ट इट. ओके, एंड दैट इज हाउ यू कैन टेस्ट पावर ऑफ द latissimus dorsi मसल. करिए, हाथ मिलाने की कोशिश करिए. पीछे अपने हाथ मिलाने की कोशिश करिए पूरे ताकत से. Okay, so on doing so, latissimus dorsi muscle becomes prominent and power of the latissimus dorsi is normal 5. फिर से करिए, normal 5/5. Okay, so both the muscles you can test at one time. Now how to test power of the trapezius muscle. So there are upper fibers and lower fibers. For upper fibers you ask your subject to shrug his shoulder. अभी सीधे खड़े हो जाइए, हाँ आराम से. So for testing the power of the upper fibers, you ask your subject to shrug his shoulders and you put resistance against it. Okay, and for testing the power of the lower fibers, anyhow you have to do the movement so that the blades of the scapula may be approximated or medial border of the scapula may be approximated. तो पहले आपको क्या करना है संतोष जी, आपको कंधे ऐसे उचकाने हैं. मैं प्रेशर डालूंगी उसके अगेंस्ट, लेकिन आपको उचकाने हैं. ठीक है, उचकाइए. ओके, सो दिस इज हाउ यू टेस्ट पावर ऑफ द अपर फाइबर्स ऑफ द ट्रेपेजियस. अब ठीक है, आराम से कर लीजिए. हाउ टू चेक द लोअर फाइबर्स ऑफ द ट्रेपेजियस. सो फॉर दैट यू आस्क योर सब्जेक्ट टू अप्रोक्सीमेट द मीडियल बॉर्डर्स ऑफ द स्कैपुला. सो संतोष जी क्या करना है, कंधों को ऐसे थोड़ा पीछे की तरफ करना है. ठीक है, कीजिए. So you can see medial borders of the scapula are at same level. So lower fibers of the trapezius are normal. Again the power is 5/5. How to test power of the muscles of the trunk. So first of all we see how to test power of the abdominal muscles. So for that you ask your patient to lie supine and then raise up from the supine position without using arms, without taking any help of arms. तो संतोष जी आपको क्या करना है कि आपको जैसे लेटे हुए हैं, आपको बैठने की कोशिश करनी है, लेकिन हाथों का सहारा नहीं लेना है. ठीक है, तो बैठ जाइए. So he is able to rise up from the supine position without use of arm. So this is known as Babinski rising up sign. So this is called as Babinski rising up sign. So this is how you test for the power of the abdominal muscles. To test power of the erector spinae muscles and muscles of the back. So for that you ask your subject to lie in prone position and you ask your subject to look
to raise his head. Okay, and you will see the power of the muscles of the back and neck. अभी संतोष जी क्या करना है, आपको सामने की तरफ देखना है, बोर्ड की तरफ. Okay, so erector spinae muscles, and that is how you test power of the erector spinae muscles and muscles of the back. So this was about the testing of the power of the muscles of the trunk. We will test the movement at the lower limb. So first we will start with the movements at the hip joint. So first I will test the flexion movement at the hip joint. For that you ask your subject to raise his leg without doing bending at the knee. He will raise his leg and you will put resistance against it. अभी संतोष जी क्या करना है, अपने पैर को यहाँ पर ये बिल्कुल सीधा रखना है घुटना, और आपको ये हिप जॉइंट पे पैर को ऊपर उठाना है. ठीक है, बिना कहीं मोड़े, घुटनों पर मोड़े बिना ऊपर उठाइए. एंड यू विल पुट रेजिस्टेंस अगेंस्ट इट. सो दिस इज द पावर ऑफ द फ्लेक्सर्स ऑफ द हिप जॉइंट. सो व्हाट आर द फ्लेक्सर्स ऑफ द हिप जॉइंट? ओके, इलियोपsoas and tensor fascial lata muscles are the flexors of the hip joint. So power is 5/5. You have to check the power on opposite side also. Now you will test power of the extensors of the hip. अभी आपको क्या करना है संतोष जी, पैर ऊपर उठा लीजिए, आपको नीचे लाना है ना. मैं प्रेशर डालूंगी अपोजिट डायरेक्शन में, पर आपको नीचे लाना है. सो यू आस्क योर सब्जेक्ट टू लोअर डाउन हिज रेज्ड लेग and you will put resistance against it. So that is how you test power of the extensors of the hip. So gluteus maximus muscle is the major extensor of the hip. Now test for the power of the abductors of the hip joint. So for that you ask your subject to take his lower limb away from the midline. Okay, and you put resistance against it. अभी संतोष जी क्या करना है, इस पैर को दूर ले जाना है शरीर से, है ना, और मैं प्रेशर लगाऊंगी अपोजिट डायरेक्शन में. कीजिए. सो दिस इज हाउ यू टेस्ट पावर ऑफ द एबडक्टर्स. ओके, ले आइए. सो व्हाट आर द एबडक्टर्स ऑफ द थाई और एबडक्टर्स ऑफ द हिप जॉइंट? सो एबडक्टर्स ऑफ द हिप जॉइंट आर ग्लूटियस मैक्सिमस एंड ग्लूटियस मीडियस. नाउ यू टेस्ट पावर ऑफ द एबडक्टर्स ऑफ द हिप. सो अभी क्या करना है संतोष जी, बाहर पैर ले आइए, जैसे पहले लाए थे, अब अंदर की तरफ ले जाना है, और मैं प्रेशर डालूंगी अपोजिट डायरेक्शन में. यू आस्क योर सब्जेक्ट टू एडक्ट हिज लोअर लिम्ब एंड यू पुट प्रेशर अगेंस्ट इट. ओके, सो दिस इज हाउ यू टेस्ट द पावर ऑफ द एडक्टर्स ऑफ द हिप जॉइंट. सो व्हाट आर द मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडक्शन ऑफ द हिप और एडक्शन ऑफ द थाई? So adductor longus, adductor brevis, adductor magnus and gracilis are the muscles which are responsible for the adduction of the hip joint or adduction of the thigh. Now you test for the external rotators and internal rotators of the thigh. अभी संतोष जी क्या करना है, पैर को बाहर की तरफ घुमाना है, कहीं ले नहीं जाना है, अपनी जगह पे ही रखना है, पर बाहर की तरफ घुमाना है. ठीक है, घुमाइए जरा. नहीं, ऐसे नहीं, मैं घुमा के दिखाती हूँ, ऐसे. ठीक है, ऐसे रखे रहना है, कहीं उचकाना नहीं है, बस ऐसे घुमाना है. ठीक है. सो यू आस्क योर सब्जेक्ट टू रोटेट हिज लोअर लिम्ब आउटसाइड. ओके, करिए. ठीक है, अब अंदर की तरफ घुमाना है. नाउ ही इज रोटेटिंग हिज लिम्ब इनसाइड. सो दैट इज हाउ यू टेस्ट पावर ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रोटेटर्स ऑफ द थाई और हिप. So what are the muscles which are responsible for external and internal rotation? Gluteus medius, minimus, obturator externus and internus are responsible for the rotation of the hip joint. Now see power of the muscles at the knee joint. अभी क्या करना है संतोष जी, आपको पैर इसको मोड़ना है. ठीक है, मैं मोड़ने से रोकूंगी, यहाँ पर मोड़ना है. ठीक है, पर आपको मोड़ना है. दैट इज हाउ यू चेक. मोड़िए. दैट इज हाउ यू चेक पावर ऑफ द फ्लेक्सर्स ऑफ द नी. ओके, सो व्हाट आर द मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्शन ऑफ द नी? आर द biceps femoris, semimembranosus and semitendinosus muscle. Okay, so power is 5/5. Everything you have to check on opposite side. अभी आपको सीधा करना है इस पैर को. That is how you check power of the extensors of the knee joint. So quadriceps femoris muscle is the major muscle which is responsible for the extension of the knee. So power is 5/5.
Now let us see the movements at the ankle joint. So what are the movements which are possible at the ankle joint? One is dorsiflexion, plantar flexion, eversion, inversion. So all these movements I am going to tell. अभी क्या करना है संतोष जी, आपको पैर अपनी तरफ ऐसे लाना है, ठीक है? मैं रोकने की कोशिश करूंगी पर आपको लाना है. Now you ask your subject to pull his feet towards him, okay, and you put resistance against it. करिए, अपनी तरफ लाइए. Everything you have to compare on opposite side. Okay, so what are the muscles responsible for the dorsiflexion? Is peronei muscle. Now he has to bring this foot away from the body. अभी आपको नीचे की तरफ धक्का देना है मेरे हाथ को, ठीक है? So this is how you test for the plantar flexus. So what are the muscles which are responsible for the plantar flexion of the foot? Are tibialis posterior, gastrocnemius and soleus muscle. Okay, responsible for the plantar flexion of the foot. Now you test for the inverters of the foot. अभी आपको क्या करना है? ऐसे करना है, ठीक है? ऐसे, ठीक है? मैं रोकूंगी लेकिन आपको करना है. करिए. यहाँ से नहीं मोड़ना है, ठीक है? सिर्फ पैर से, सिर्फ यहाँ से मोड़ना है. Okay. So inverters of the foot are tibialis anterior and posterior. Power is 5/5. Everything you have to compare on opposite side. अब इसको बाहर की तरफ ले जाइए. मैं रोकूंगी पर आपको लाना है. Okay. So again the power of everters are 5/5. So chief everter muscles are peronei muscles. So this is how you test power at the ankle joint. The same you can do at the toes also. Dorsiflexor and plantar flexors of the toe. अब ये अंगूठों को क्या, ये उंगलियों को क्या करना है? पीछे की तरफ लाना है. मेरे हाथ पर धक्का दीजिए. So this is how you check power of the dorsiflexors of the toe. अभी मेरे हाथ पर धक्का दीजिए. Okay, you ask your subject to put pressure on your fingers. Okay, that is how you test power of the plantar flexors of the toe. So this is all about the power of the lower limb. See coordination of muscles. Now what is coordination of muscle? Coordination is smooth recruitment, interaction and cooperation of muscles or group of muscles to carry out a definite and precise motor act. Now coordination of the muscles depend upon the several factors like there has to be perfect cerebral function, there has to be proper sense of position of limb that occurs due to the muscle spindle, and also because of proper tone of the muscles. So there has to be proper tone of the muscles, proper cerebral functions and sense of position of the limb, that is through the muscle spindle. So coordination of the muscle is tested separately for the upper and lower limbs. Now first of all we are going to do the testing of coordination in the upper limbs. So what we are going to do first test is finger nose test. So what we do in finger nose test, we ask our subject to touch his finger and nose, alternatively his finger and nose, finger and nose, like this. In place of his finger you can put your finger also. Okay, so first he has to do with the open eyes, then with the closed eyes. मास्क उतार लीजिए, ठीक है. अभी आपको ऐसे फिंगर अपनी सामने रखनी है और इस फिंगर से पहले नाक टच करनी है, फिर फिंगर, फिर नाक, फिर फिंगर. टच करिए. अब आंख बंद करके करिए. आंख बंद कर लीजिए. फिर से यही काम करना है, आंख बंद करके. अब दूसरे हाथ से करना है. दूसरे हाथ की फिंगर यहाँ रखनी है ऐसे और उससे करना है. सो ईच मूवमेंट हैज़ टू बी रिपीटेड बाइलेटरली. अब आंख बंद करनी है. ईच मूवमेंट हैज़ टू बी डन फर्स्ट विद आईज ओपन एंड देन विद आईज क्लोज्ड. सो ही इज एबल टू परफॉर्म द मूवमेंट प्रिसाइजली. ओके, सेकेंड टेस्ट इज बस हो गया. सेकेंड टेस्ट इज मेकिंग अ सर्कल विद द इंडेक्स फिंगर. अभी आपको क्या करना है? उंगली से ऐसे सर्कल बनाना है, ठीक है? ऐसे बनाइए. ठीक है. अब दूसरे हाथ से बनाना है. फिर से इसी हाथ से बनाना है, आंख बंद करके.
बड़ा सर्कल बनाते रहिए, बड़ा सर्कल बनाते रहिए। हाँ, दूसरे हाथ से। ठीक है। In place of circle you can ask him to make a triangle like this, okay, or quadrangle like this. It's not necessary you ask to make circle, you can ask him to make triangle or quadrangle. Okay, next is diadochokinesia. What is diadochokinesia? I'll ask him to perform the rapid alternative opposite movement, any kind of rapid alternative opposite movement. So अभी आपको क्या करना है, एक हाथ ऐसे रखना है, दूसरे हाथ को ऐसे 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 जल्दी जल्दी करना है जैसे मैं कर रही हूँ, है ना? ठीक है, करिए। अब आंख बंद करके करिए, यही चीज आंख बंद करके करिए। सो ही इज एबल टू परफॉर्म द रैपिड ऑल्टरनेटिंग अपोजिट मूवमेंट विद आईज ओपन एंड विद आईज क्लोज्ड। दूसरे हाथ से करना है ऐसे ही, आंख खोल के पहले। ही इज एबल टू परफॉर्म द मूवमेंट। दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज डायडोकोकाइनेसिया। आंख बंद करके। So suppose in case he is not able to perform the test, the condition is called as adiadochokinesia. And suppose, ठीक है, हो गया. And suppose if he is performing the test incorrectly, like infrequently and very random kind of movements are done, so that condition is type of test is known as dysdiadochokinesia. In adiadochokinesia, he is completely not performing the test, and dysdiadochokinesia, the movements are disturbed, like infrequent and random kind of movements. So this is test for the coordination in the upper limbs, the coordination of muscles in the lower limb. So how to check the coordination of the muscles? So first test is knee heel test or heel shin test. So let us see in our subject. We ask our subject to put his heel on the knee and then to slide the heel along the leg, along the shin of the leg towards the ankle. अभी संतोष जी क्या करना है आपको कि इस पैर की हील से, है ना, आप ये घुटनों पे रखोगे और नीचे खिसकाते हुए ऐसे लाओगे यहाँ तक, है ना? तो ऐसे आपको करना है। पहले आंखें खुली रख के फिर आंखें बंद रख के, ठीक है, करिए। So he has to put his heel on the knee, and then he will slide over the shin of the leg towards the ankle, and he has to repeat the procedure. So first test has to be done with the open eyes, then with the closed eyes. अब आंखें बंद करके कर लीजिए, यही चीज दोबारा करनी है, आंखें बंद करके कर लीजिए। Okay, so he is able to perform the test. So same test has to be repeated on opposite side. अब उस टांग से कीजिए, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। इस पैर के घुटने को टच करना है, इसकी हील से टच करिए, एंड देन द सेम थिंग हैज टू बी रिपीटेड ऑन द अपोजिट साइड, एंड द पेशेंट इज एबल टू परफॉर्म द टेस्ट फर्स्ट विद द ओपन आइज, देन विद द क्लोज्ड आइज। आंखें बंद कर लीजिए अब, फिर से करिए एक बार। सो दिस इज हील शिन टेस्ट और नी हील टेस्ट। सो दिस इज नॉर्मल इन आवर सब्जेक्ट। हाँ, अब सीधा कर लीजिए। अब आपको क्या करना है? सो नेक्स्ट टेस्ट इज मेकिंग ए सर्कल इन द एयर। सो विद द हेल्प ऑफ द ग्रेट टो ही विल मेक सर्कल इन द एयर। अब आपको पैर से सर्कल बनाना है हवा में, जैसे हाथ से बनाया था वैसे। अब आंख बंद कर लीजिए, फर्स्ट विद द ओपन आइज, देन विद द क्लोज्ड आइज। फिर से कीजिए आंख बंद करके। सो ही इज एबल टू मेक द सर्कल। यू कैन आस्क हिम टू मेक ट्राइंगल और क्वाड्रेंगल। ओके, अब दूसरे पैर से करिए, पहले खुली आंखों से फिर बंद आंखों से। अब आंख बंद कर लीजिए, फर्स्ट विद द ओपन आइज, देन विद द क्लोज्ड आइज। सो ही इज एबल टू मेक सर्कल इन द एयर। ठीक है, बस रख लीजिए। थर्ड टेस्ट इज यू आस्क योर सब्जेक्ट टू डू टेंडम वॉकिंग। सो फॉर दैट ही हैज टू वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन। अब खड़े हो जाइए संतोष जी। अब आपको ये जो लाइन बनी हुई है, इस लाइन में चलना है, ठीक है। कैसे चलना है? पहले एक पैर रखेंगे, फिर हाँ ऐसे चलना है आपको, ठीक है। पहले खुली आंखों से चलना है ना, आराम से चलिए। फिर आंख बंद करके यू हैव टू स्टैंड बिहाइंड योर सब्जेक्ट टू सपोर्ट हिम इन केस इफ ही फॉल्स। ओके, यू शुड बी एबल टू सपोर्ट हिम। सो हियर माई सब्जेक्ट इज एबल टू वॉक फर्स्ट विद द ओपन आई।
eyes, then with the closed eyes. अब आँख बंद कर लीजिए, आँख बंद कर लीजिए. First with the open eyes and then with the closed eyes he is able to walk in the straight line. ठीक है संतोष जी, बैठ जाइए. So these are the tests for the coordination of the upper and lower limb. Suppose if your subject is able to perform with the open eyes but not with the closed eyes, it means this is sensory ataxia. Okay, so here vision is compensating the lesion in the sensory, anywhere in the sensory pathway. So this is sensory ataxia. In case if your subject is not able to perform the test even with the open eyes, not with the closed eyes, even with the open eyes, he is not able to perform the test, it means this is cerebellar ataxia. In case of cerebellar lesion, your subject will not be able to perform the movement even with the open eyes.